Hello students, welcome back to the class. In the last class we discussed regarding block elements, S block, P block, D block and F block elements. I also discussed their characteristics. So hope you have remembered these things. S block, P block, D block and F block, their characteristics you have to remember. Okay, and their general electronic configuration also that you have to remember. So if you remember this, then it will be easier for you to go for the block elements which will be discussed in second year. Then today we will discuss another important thing, how to determine the block, period and group of an element whose electronic configuration we can write. I think all of you can write the electronic configuration of any element given to you. जेकोनसी element दिले तो तार electronic configuration लिखि दे पारिबो. So if you write the electronic configuration, then you can easily predict the block of the element, to which block the element belongs, the period को period से रहुची and the group को group रे रहुची. So next, determination of block, period and group of an element. हमको जे कौन से एलिमेंट देले हमें तार प्रेडिक्ट करते परिबा व्हाट विल बी द ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप. So first, how to predict the block? Number 1, block. So I have already told you that depending on the entry of the last electron टा को सबसेल को जाउची S, P, D और F सबसेल को जाउची. Accordingly, the periodic table has been divided into 4 blocks. जदि लास्ट इलेक्ट्रॉन टा S को जाउची ताले S ब्लॉक, जदि P को जाउची P ब्लॉक, जदि D को जाउची then D and F को वाले F ब्लॉक. Okay, so you can predict the block by knowing the entry of last electron to S, P, D और F ऑर्बिटल. जो ऑर्बिटल को जीवो सही ब्लॉक हबो. एग्जांपल देबी छ. तापर आछा नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड. होई साची पीरियड is denoted by principal quantum number. Each period corresponds to one principal quantum number. को principal quantum number na highest value of n gives you the period. So how to determine the period? Na highest value of n. N means principal quantum number determines the period. को पीरियड रे इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट रहउची केंति जानिबा ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देला परे कोन हला ना n वैल्यू जोटा हाईएस्ट रहबो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जोटा हाईएस्ट रहबो दैट गिव्स यू द पीरियड नंबर. तापर एटा होची तुमटी मन रखियो पड़िबो. देन ग्रुप. फॉर डिटरमाइन द ग्रुप you have to first determine the block determine कर सला परे accordingly you will determine the group. for तार लिखिबा for S block element, S block कौन है? For S block elements, group number कितना है? For S block elements, group number is equal to number of valence electrons. Valence electron जानी चाहिए छुआ? Electrons present in the valence or outermost shell. So valence electron संख्या जहाँ तार ग्रुप नंबर शेयर को मन करो ना S ब्लॉक एलिमेंट रो मन रखिबो. ग्रुप नंबर फॉर्मूला होची नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. फॉर P ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर P ब्लॉक एलिमेंट्स कोन फॉर्मूला छा मन रखिबो. ग्रुप नंबर is equal to 10 plus number of valence electrons.
पी ब्लॉक पे फार्मूला कोन हला छुआ ना ग्रुप नंबर केते हबो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सी को आसीबा फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक माने ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स एटी किए फिल अप होउची ना पेनल्टीमेट सेल बा इनर सेल ता फिल अप होउची तेनो ग्रुप नंबर केते पाइबा छुआ ना ग्रुप नंबर equal to number of electrons in n minus 1 d जानि छ जदि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम n हुए ता पूर्वटा फिल अप होबो n minus 1 d plus ns ऑर्बिटल्स एही दुईटा ऑर्बिटल ले टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या जहा ता ग्रुप नंबर 6 सो इट विल बी मोर क्लियर व्हेन आई गिव यू द एग्जांपल ताले आपै कोन हला फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट एंड आउटरमोस्ट सेल दुईटा को भाग नियंती दुईटा को वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होंती सो दे पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन दैट्स व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट दे शो वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तापर लास्ट आसीबा फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन हम ना ग्रुप नंबर केते हो छुआ देखो सब तक ए ब्लॉक गोटे ग्रुप रे अछंती दिस इज एन एक्सपेंशन एटी केवल तक एक्सपांड करके लिखा आइछि सो व्हाट इज द ग्रुप नंबर कोन लिखबो ए ब्लॉक रो ग्रुप नंबर फिक्स्ड दैट इज 3 ए ब्लॉक पई तुमको कोनसी फार्मूला दरकार नै दैट इज फिक्स्ड बिकॉज़ ऑल द ए ब्लॉक एलिमेंट दे बिलोंग टू दीस टू ओके फॉर ए सीरीज दे बिलोंग टू period 6 5 series they belong to period 7 and group number is 3 तो एति की फार्मूला छ आराम से मन रहि जो तुमर so you can remember this formula so let us take a example माने कर छ देखिबा फर्स्ट एस ब्लॉक देखिबा सपोज से सोडियम कॉन्फिगरेशन लिखिबा 1s2 2s2 2p6 3s1 so what is the valence cell now outermost cell किए third cell number of electrons present in third cell 1 ताले valence electron संख्या केमति कंप्यूटर जानि परलो so valence cell is the third cell and number of valence electron is 1 एटा फर्स्ट तेनो लिखबा ब्लॉक कोन हबार आर ब्लॉक हबो कोन हबो लास्ट इलेक्ट्रॉन कोडी गला s ऑर्बिटल गला so s block it belongs to s block तापर आसीबा पीरियड नंबर के कोन कहितली हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटी n वैल्यू 1 2 2 3 n वैल्यू हाईएस्ट कोटा आछि 3 ता माने दैट इज द पीरियड नंबर इटा होछि पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n गिव्स यू द पीरियड नंबर तन को पीरियड रहबो ना पीरियड 3 थर्ड पीरियड रहबो हला ग्रुप देखबा ग्रुप बाय फार्मूला s ब्लॉक अलगा ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते कहली छुआ 1 तेनु ग्रुप 1 ग्रुप होछि 1 देखि देबो छ ठीक अछि कि नै देखो छ सोडियम रहला एठी ग्रुप 1 ठीक अछि थर्ड पीरियड 1 2 3 थर्ड पीरियड ठीक अछि s ब्लॉक so this is how you can easily determine the block period and group of any element given to you ठीक अछि नेक्स्ट आसीबा छ माने करो लेट अस से p ब्लॉक रो आसीबा p ब्लॉक रो आसीबा लेट अस से सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 केते गेला छुआ 12 तापरे 3p2 ठीक अछि 3p2 ताले एठी फर्स्ट आसीबा ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कोठी गला p को ताले ब्लॉक कोन हे गला ना p ब्लॉक हे गला p ब्लॉक सेठी किछि डाउट अछि कि छुआ नाही लास्ट इलेक्ट्रॉन ता जोठी जीवो सेटा p ब्लॉक आर वैलेंस सेल कोटा आउटरमोस्ट सेल किए थर्ड सेल केतरा इलेक्ट्रॉन छै 2 + 2 4 ताले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची 4 सिलिकॉन नो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची 4 ताले एबे आसीबा पीरियड को हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केते रहउची n तेनो पीरियड हबो सेही थर्ड पीरियड हबो
3 आपण आसीबा ग्रुप ग्रुप केते हबो देखो छ p ब्लॉक पई 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते कहि दिछि 2 प्लस 2 4 then 10 plus 4 माने केते हिजबो ग्रुप 14 चेक करना बछवा देखो फर्स्ट हला p ब्लॉक सिलिकॉन p ब्लॉक अछि ठीक अछि थर्ड पीरियड ठीक अछि ग्रुप 14 ठीक अछि बुझेला तापर d ब्लॉक नबा माने कर छवा क्रोमियम नबा क्रोमियम केते 24 आर्गन शॉर्ट कर लिख दउ छवा आर्गन तापर कोठी जीवो छवा ना क्रोमियम देखो एठी आसला छवा एठी ताले कोन एटा हला 4s2 एठी 4s1 3d5 लिखि सेट ऑलरेडी आगरो so this is the configuration of chromium 4s1 3d5 हला एठी कोन हला ना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केते 4 फोर्थ सेल फिल अप हे होची फर्स्ट आसीबा ब्लॉक ब्लॉक कोन हम लास्ट इलेक्ट्रॉन कोठी गला d को तेनु आर आसी जीवो ब्लॉक छुआ ब्लॉक हे जीवो d ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन ता जाउची d को आ एटा एक्सेप्शन पाई 3d5 4s1 होची d ब्लॉक हला तापर आसीबा पीरियड पीरियड केते आसीबो छुआ ना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n केते अछि 4 तेनु पीरियड हला 4 ग्रुप देखिबा केते होची ना नंबर ऑफ एटी फार्मूला का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1d plus ns ऑर्बिटल एटी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n केते 4 तेनु ns माने 4s केते इलेक्ट्रॉन होची गोटे n-1 माने केते 3d तेनु n-1d माने केते 3d तेनु 4s और 3d रे केते इलेक्ट्रॉन होची 6 टा तेनु यार ग्रुप नंबर हे जिवो छुआ 6 पांचटा अछि n-1d रे आउ गोटे अछि ns रे सो कोन फार्मूला n-1d plus ns ऑर्बिटल जेतरा इलेक्ट्रॉन अछि सेटा हिजो ता ग्रुप नंबर 6 5 1 6 देखि दवा छुआ बर्तन आसीबा क्रोमियम को क्रोमियम रहला देखो ब्लॉक तो ठीक अछि d ब्लॉक ठीक अछि पीरियड देखो फोर्थ पीरियड रहला आउ ग्रुप हला 6 बुझिला छुआ सो दिस इज अ वेरी इजी फार्मूला you can easily remember it and based on it you try to find out the block group and period of other elements निजे चेष्टा करिवो तुमको असाइनमेंट दोची try to find out the block period and group of these following elements ए उडा चेष्टा करिवो असाइनमेंट सोडियम then potassium then nitrogen potassium magnesium manganese copper fluorine एटी की चेष्टा करो छा सो दिस इज द असाइनमेंट कौन now find out the block period and group of the following elements के ना nitrogen potassium magnesium manganese copper and fluorine ये छोटा चेष्टा करिवो निजे सॉल्व करके मते पठेबो सो दिस इज द फार्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट विल गो टू पीरियडिक ट्रेंड्स so next students will discuss the periodic trends that means how the properties of elements they differ or they change gradually when mostly we'll go for two things when we move from left to right along the period एतले बाहर डाउन को जीवा सेतले period तर property कोन चेंज हबो एवं when we move down the same group समान ग्रुप एतले ऊपर तळ को आसीबा when we move down the group कोन property change हबो so these are called periodic trends that is gradual change in the properties of the elements when we move across a period or down the group दुईटा पॉइंट मन रखिबो across the period माने period रे लेफ्ट टू राइट को जीवा और down the group रे समान ग्रुप रे ऊपर तळ को आसीबा so we'll follow what will be the changes so mainly the properties become similar due to electronic configuration koisachi already so the periodicity in the properties of element is mainly due to recurrence of similar electronic configuration
So after a definite interval, जो तुमको last class रे कहती थी, after a definite interval, the electronic configuration is repeated. That means we have a same number of valence electrons. That means same valency in the same group. That's why the properties of elements they recur after a definite interval. That is called periodicity. Padi sarch already. So next we'll discuss the physical properties which changes when we move across the period and down the group. So both physical properties achi like melting point, boiling point, etc. We will not discuss them. We will only discuss these four. कौन कौन पढ़िबा ना atomic and ionic radius. ये केमती चेंज हबो. Next ionization enthalpy. Ionization enthalpy, how it will vary. Then electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy and electronegativity. Last one is electronegativity. So everything will be included in these four discussions, and these are very important with respect to determination of property of an element. कौन atomic and ionic radius. In order to determine the size, we have to find out the atomic and ionic radius. Then ionization enthalpy, that means when a metal atom in its gaseous state loses one electron, we have to spend some energy. That energy or that change in the heat content is called ionization enthalpy. We will be discussing in details. Then similarly, when an electron is added to neutral gaseous atom in its ground state, energy is released. That released energy or that change in heat content is called electron gain enthalpy. Then last one, electronegativity. Electronegativity, that is the tendency of an atom in a molecule to attract shared pair of electron towards itself. So it is not a single property of an element, it is the property of an atom in a molecule. So that decides many features, many properties. So you have to discuss these things in details. So starting with your atomic and ionic radius. We'll start with atomic and ionic radius. So first, let us know, is it possible to determine the atomic radius with perfection? Atomic or ionic radius को हमें perfectly बाहर करी परिवा कि? No. My answer is no. Why? We cannot determine it. It is very difficult to determine the atomic and ionic radius. Why? First, let us come to atomic radius. So in order to determine the radius, first thing is that there should be a clear-cut boundary. आमे पढ़ी सारछु orbital the boundary is imaginary. So there is no clear-cut boundary. That's why we cannot. So when there is no boundary, suppose this is the nucleus. So when there will be no boundary, exactly predefined boundary jodi nahi, how can we determine the radius? We cannot determine the radius. Then second thing, in order to determine the radius or size of an atom, we have to isolate it. ताको हमको अलगा रखियो. Isolate माने अन्य मान को अलगा करिया पड़ो. And it is very difficult, quite difficult to isolate an atom in order to determine its size or in order to determine its radius. The exact determination of atomic radius is impossible due to two things. कौन लिखिबा? So it is not possible. Determination of atomic radius is not possible due to कौन पॉइंट कहली छुआ दुईटा पॉइंट मन लिखिबो. फर्स्ट, एज there is no clear cut boundary of the electron cloud. न्यूक्लियस रे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अछि तार कोनोसी निर्दिष्ट सीमा बाउंड्री नाही, हम तेनु रेडियस बाहर करि परिबा नाही. So this is the first point. जेहेतु तार कोनोसी प्री डिफाइंड बाउंड्री नाही, it is not possible to determine the radius. Second one, it is quite difficult to isolate माने अन्य को अलगा करिया.
to isolate an atom in order to determine its radius. आमे गोटे atom को isolate करिया बहुत difficult से लगता radius बाहर करी हबो नहीं. Then how can we find out the atomic radius, or how can we speak of the size of the atom? It is done in a relative manner. So atomic radius can be determined by indirect means. So atomic radius can be determined by either of these three ways. कौन? The first one is your covalent radius. Then second one is metallic radius. And third one is van der Waals radius. So first I पढ़िलु that it is not possible to isolate an atom and there is no clear cut boundary. तेणु atomic radius exactly बाहर करि परिबो नाही, we cannot determine it. So how it is determined? In a relative manner. So indirectly it is determined by using either of these three methods: covalent radius, metallic radius and van der Waals radius. खाली तुमको शॉर्टली कहि दोछि ता डेफिनेशन ऑन रखबो. So covalent radius जदि हम देखिबा तुमको एग्जांपल दोछि. So suppose these are two covalently bonded atoms. So they are covalently bonded with a single bond. So the overlap will take place, overlap of the electron clouds will take place. These are the two nucleus. Okay, two nucleus eta. So ताको भीतर थिया distance रो half टा को हम कोन कहबा covalent radius. तो definition कोन हो छ? It is half the distance of the nucleus of two covalently bonded atom by a single bond. Condition होची single bond हेतिबो, covalently bonded हेतिबो, ताको internuclear distance दुईटा nucleus वितर distance half टा होची covalent radius. So definition सुनो, it is half of the distance between the two nuclei of covalently bonded atom by a single bond. It is the half of the distance of the nuclei. ताले ताको कहबा छ covalent radius. माने कर छ हाइड्रोजन covalently bonded single bond अछि, माने करता bond length होछि हाइड्रोजन नो bond length होछि 74 picometer. Bond length माने कोन? Total internuclear distance is bond length. ताले covalent radius कते हिजबो? Covalent radius will be half of it. कते हिजबो? 74 by 2. That means 37 picometer. Because two hydrogen atoms are covalently bonded by a single bond. तो ताकर internuclear distance जोटा हम bond length को केते ना 74 picometer. तो covalent radius definition कर पड़लो half of the internuclear distance, तो half of bond length केते हिजो 37 picometer. So this is covalent radius. तापर छ आसीबा metallic radius. You know metals form a different type of bond called metallic bond. So they are arranged in a definite pattern called metal lattice. So in a metal, the metal atoms are present in a close packed form like this. So this is called metal lattice. So they are arranged in a close packed system with closest approach. This is called metal lattice. So these are the metal atoms which are present in the metal lattice. So what will be metallic radius? Now half of the internuclear distance of two adjacent दुईटा पाखापाखी थिबा metal atom रो internuclear distance रो half टा हबो metallic radius. So it is half of the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms present in a metal lattice. बल्लकम सुनो, this is the next assignment. So it is half of the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms present in a metal lattice. ता कहबा छवा metallic radius. It is applicable for all metals. Because metal they form a separate type of bond. Neither they form ionic bond nor covalent bond. It is a separate bond called metallic bond. So that is metallic radius. Then next is van der Waals radius. So when there is no bond formed between the molecules or even atoms, inert gases, they do not form any molecule in normal condition. दुईटा पाखापाखी थिबा inert gas atom रो internuclear distance रो हाफ टा कहबा van der Waals radius.
So if there is no force existing between any two species, there is a common force, weak force of attraction existing. जदि कौन सी फोर्स नहीं तले weak force निहाती अछि, that weak force of attraction is called van der Waals force of attraction. ता माने जतले दुईटा नॉन बॉन्डेड एटम रहिबे छुआ मनकर दुईटा नॉन बॉन्डेड एटम रहिबे in case of मनकर inert gas ए मनकर बॉन्डिंग ही they are not bonded काहे inert gas normal condition ने बॉन्ड फॉर्म करंती नहीं. सो से क्लोजेस्ट अप्रोच जतले आसीबे टू नेबरिंग एटम्स ताकर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहिबो तार हाफ ताको हम कहबा van der Waals radius. So what is van der Waals radius? Now it is the half of the distance between the nuclei of two neighboring atoms in a molecule or atoms in case of inert gas. हला inert gas केस रे atomic state रहबे बा molecule state रहबे मनकर एपटे गोटे molecule से फॉर्म करछि. This is a molecule, this is atom of one molecule, एटा आउट molecule, this is atom of another molecule. समान के भीतर बॉन्डिंग हेछि किंतु एई दुटा भीतर समान का क्लोजेस्ट अप्रोच रे जतले रहबे ताकर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रा हाफ टाको हम कहबा van der Waals radius. So it is applicable for two non-bonded molecules, also two non-bonded. ताकर भीतर कोनोसी बॉन्ड नाही, जदि बॉन्ड नाही कोन अछि van der Waals force अछि. So that is called van der Waals radius. Half the distance between two non-bonded atoms in their closest approach. Half the distance of the nucleus of two non-bonded atoms in their closest approach ताको कहबा van der Waals radius. तो इनडायरेक्ट मीन्स छुआ ए तीन प्रकार हमें रेडियस बाहर करि परिबा. नॉर्मली हम जानिचु जते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रा स्ट्रांग थाइ से माने सते पाख पाख रहबे. सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रा जते स्ट्रांग बॉन्ड ता जते स्ट्रांग होइताय ताले बॉन्ड लेंथ सते कम होबो एवं ऑब्वियसली रेडियस ता कम हो बॉन्ड लेंथ कम हो माने रेडियस कम हो. सो सबटु स्ट्रांगेस्ट किए ना कोवैलेंट बॉन्ड तापर आसीबो छुआ मेटालिक बॉन्ड तापर आसीबो छुआ van der Waals फोर्स. जदि हम अट्रैक्शन वाइज देखिबा द हाईएस्ट अट्रैक्शन इज देयर in case of covalent bond तापर आसीबो मेटालिक बॉन्ड सबटु वीकेस्ट फोर्स किए ना van der Waals radius. तेनु आता साइज कंपैरिजन जदि करिया कोन हबो ना मन रखिबो छुआ van der Waals radius is the highest. से सबटु अधिक हबो काहे कि ना का भीतर कोनोसी अट्रैक्शन वीक फोर्स ता अछि तेनु डिस्टेंस रहबे will be greater than metallic radius will be greater than covalent radius. So this is my next assignment. Define covalent radius, metallic radius and van der Waals radius. Laki pathebo mate chua. So this is the next assignment. First assignment already dei sarchi to determine the block, period and group of the elements. So cheta laki pathebo. This is assignment number 2. Define covalent radius. Picture clear बुझ पर तो चुआ. Define metallic radius and define van der Waals radius and arrange them in the decreasing order of their length. Bond length. Arrange them in the decreasing order of their length. ताले सबटु अधिक हबो कि van der Waals radius तापर आसे metallic radius and covalent radius हबो सबटु लिस्ट काहे ना that force of attraction is the greatest one. Okay students, so this is all about your atomic radius. Then what is ionic radius? Now in case of ions, again there is no clear cut boundary, so how to define it? Now it is the distance from the nucleus towards that point where the influence of nucleus will be there on the electron cloud. Electron cloud upre je porjonto nucleus ro effect rohichi sei distance ko ame kaiba ionic radius. Okay students, then normal trend ko jodi asiba periodic trend ko asiba, so when we move from left to right in a period the atomic radius decreases. What is the normal trend? Now when we move from left to right along a period the atomic radius decreases. जेतले तळकु तळ आसीबा the atomic radius increases. और atomic size atomic radius means atomic size. So trend ता मन रखियो छुआ when we move from left to right along a period the atomic size decreases. जेतले तळकु तळ आसीबा same group रे the atomic size increases. आउ गोटे सिंपल फार्मूला बते दउ छुआ. This is the trend for your atomic size. बाकी जो तीनटा रहिला किए किए ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट तार ऑपोजिट. तेनु ट्रेंड मन रखियो शॉर्टकट टा कहि देली. जदि तुमे गोटिए ट्रेंड केवल मन रख दोछो व्हाट इज द ट्रेंड इन केस ऑफ एटॉमिक साइज. ना व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. उपरुक्त जतन व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. ताले लेफ्ट टू राइट गले डिक्रीज करछि, उपरुक्त तळक असले इंक्रीज करछि. बाकी तीनटा देखो जस्ट आर ऑपोजिट. तेनु जदि गोटे मन रख दो यू कैन रिमेंबर
the trends in these four. Okay, students. So in the next class we will discuss the periodic trend of atomic size. कही देछि कौन now when we move from left to right the atomic size decreases, when we move from top to bottom the atomic size increases. So next class we will try to find out the reasons behind it. Okay, students. So this is for today. See you in the next class. Thank you very much.